everyone, so let's move towards our today's topic, which is as we know that air consists of three parts: inner air, middle air, and the external air. Now first we will discuss about internal air, because internal air among the three parts of the air, that is external, middle, and internal air will develop first. Okay, so in the fourth week from the first pharyngeal arch. Okay, आपको एक बात समझनी होगी, फर्स्ट फेरेंजियल आर्च भी होता है, फेरेंजियल ग्रूव भी होता है, फेरेंजियल पाउच भी होता है, फेरेंजियल जी ये तीन चीज़ें होती हैं. तो फेरेंजियल ग्रूव इन्वेजिनेशन होती है, ठीक है, जो बेसिकली फर्स्ट फेरेंजियल आर्च को सेकंड फेरेंजियल आर्च से सेपरेट कर रही होती है. जो फेरेंजियल आर्च है वो बेसिकली सी शेप का स्ट्रक्चर होता है, और लाइक ऐसा है फेरेंजियल पाउच. तो फेरेंजियल पाउच एक अंदर येलो कलर की लाइनिंग होती है, आप डायग्राम में भी अक्सर देखते होंगे, तो वो फेरेंजियल पाउच होता है. सो यू हैव टू रिमेंबर नाउ व्हाट हैपन. इंटरनल एयर कैसे बनता है? सबसे पहले इंटरनल एयर बनता है, होता ये है कि फ्रॉम द फर्स्ट फेरेंजियल पाउच, फ्रॉम द फर्स्ट फेरेंजियल आर्च में जो एक्टोडर्म है वहाँ पे थिकनिंग अपीयर होती है ऑन द लेटरल साइड ऑफ द हेयर, on the lateral side of the head. As you know that air is present on each side of the head, so there will be two thickenings, one on each side of the head, and that thickening is basically on the surface of the ectoderm. Now due to some signals, that thickening will cause invagination, okay, inside that pharyngeal arch, and आहिस्ता आहिस्ता वो जो इन्वेजिनेशंस हुई है वो एक पिट फॉर्म हुआ है, जैसे ऑर्टिक पिट भी कहते हैं. अच्छा, ये जो थिकनिंग होती है उसे ऑर्टिक प्लैकोड्स कहते हैं, ओके, और जो इन्वेजिनेशन होती है उसे ऑर्टिक पिट कहते हैं, ऑर्टिक पिट. नाउ व्हाट हैपन, जब ऑर्टिक पिट बन जाता है तो ऑर्टिक पिट वेसाइकल बन जाता है. कैसे वेसाइकल बनता है? जो ऑर्टिक पिट है वो ऑब्वियसली एंडोडर्म के बीच में एंडोडर्म की लाइनिंग से बन रहा था, तो अब वो एंडोडर्म एक्टोडर्म, तो एक्टोडर्म की जो एजेस होंगे वो आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे, और जो नीचे वाला जो इन्वेजिनेशन होगा वो आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे. तो इन्वेजिनेशन बेसिकली सर्कुलर बन जाएगी, और उसे हम कहते हैं ऑर्टिक वेसाइकल. ना ऑर्टिक वेसाइकल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, वेंट्रल पार्ट एंड डॉर्सल पार्ट. द डॉर्सल पार्ट इज ऑल्सो नोन एज डॉर्सल यूट्रिकुलर पार्ट, and ventral part is also known as ventral saccular part. As the name indicate, dorsal utricle part will form utricle and the ventral saccular part will form saccule. Now what is saccule, what is utricle? As you know that utricle and saccule are the part of the membranous labyrinth. You have to remember one more point. The dorsal utricular part will form utricle as well as semicircular duct. The ventral saccular part will form saccule as well as coccygeal duct. Okay, so आप एक शॉर्टकट बना लें. सुप्रीम कोर्ट का शॉर्ट एब्रीविएशन क्या है? SC, ठीक है, SC मतलब सुप्रीम कोर्ट, ठीक है. तो सुप्रीम कोर्ट, S फॉर सैक्यूल, तो अगर सैक्यूल की बात है तो फिर C से क्या आता है? कॉक्लियर डक्ट. तो कॉक्लियर डक्ट और सैक्यूल यही सब फॉर्म होंगे. नाउ वन मोर पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर विच आई फॉरगॉट टू टेल यू, दैट Aortic vesicle will form only the membranous labyrinth. As you know, the internal air or the inner air is further divided into two parts, membranous labyrinth and the bony labyrinth. So membranous labyrinth is formed by this part, that is aortic vesicle. Now bony labyrinth is formed by the mesenchyme which is surrounding this area, that is aortic vesicle को जो mesenchyme surround कर रहे हैं, वहाँ पे जो मेसेनकाइम है वो बेसिकली कार्टिलेज स्ट्रक्चर बनाता है, और वो कार्टिलेज स्ट्रक्चर फर्दर फॉर्म होकर बोनी कार्टिलेज, वो बोनी लैबिरिंथ फॉर्म करता है. बोनी लैबिरिंथ में कौन कौन से पार्ट हैं? सेमी सर्कुलर कैनाल है, कॉक्लियर डक्ट है, एज कॉक्लियर कैनाल है, कॉक्लिया है, एंड वेस्टिब्यूल है. ओके, एंड मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ में क्या है ये आपको मैं बता चुका हूँ. सो नाउ यू हैव टू रिमेंबर दीज पॉइंट एज वेल. जहाँ पर कॉक्लिया और यूट्रिकल का सैक्यूल का कनेक्शन होगा, वहाँ पर एक स्पाइरल गैंग्लिया फॉर्म होगा, विच विल एज यू नो that the sound waves will transmit from external acoustic meatus
to tympanic membrane, then middle ear, then inner ear, and in the inner ear, in the cochlea, then after cochlea it will enter into the nerve. So to enter into the nerve, there will be a ganglia which is formed by spiral organ, and that ganglia is called as spiral ganglia. And the nerve which is related to this whole process of detection of the sound, it is called as vestibulocochlear nerve, and that nerve is basically cranial nerve number 8. So you have to remember this as well. Now obviously bony labyrinth में obviously कॉकलिया है, कॉकलिया में फ्लूइड होता है जैसे पेरीलिम्फ कहते हैं. तो ये सारी की सारी चीज़ें मीजनकाइम से बनती है जो कि ऑटिक वेसिकल के सराउंड होता है. नाउ वी विल गोना टॉक अबाउट मिडल एयर, बिकॉज आफ्टर इंटरनल एयर मिडल एयर विल फॉर्म. Now middle ear, you have to remember one more point. Inner ear obviously inside, मतलब अंदर की तरफ होता है. So inner ear obviously एक्टोडर्म की सरफेस पे जब ऑप्टिक वेसिकल फॉर्म हो गया, ऑटिक वेसिकल सॉरी, तो वो ऑटिक वेसिकल बेसिकली आहिस्ता आहिस्ता होकर पीछे पीछे आना शुरू कर देगा. मिडल एयर के भी पीछे आ जाएगा, साथ ही साथ मिडल एयर की भी डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता. कैसे शुरू होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैपन फ्रॉम द फर्स्ट फेरेंजियल पाउच, a recess, a small space is formed called as tubotympanic recess. Now tubotympanic recess also consists of two parts, dorsal part and ventral part. Okay, now sorry, not dorsal or ventral part, proximal and distal part. So proximal part is forming a tube called as eustachian tube or the auditory tube, which is connecting the middle ear to the, as we have studied, as we are discussing about the middle ear. So middle ear is connected with the nasopharynx through a tube called as auditory tube or eustachian tube. So it is formed by the proximal part of the tubotympanic recess, and the distal part will form the tympanic cavity, air ossicle, in which air ossicle में कौन कौन से ossicle है भाई मैं आपको बताता हूँ. मेलियस बोन है, स्टेव्स बोन है, इंकस बोन है. तो ये जो 3 बोन्स हैं ये आपने याद रखनी है कि ये इससे बनते हैं, distal part of the tympanic tubotympanic membrane से बनते, tubotympanic recess से बनते हैं. And one more point, that malleus and incus bone is formed by first pharyngeal arch, and the stapes bone is formed by neural crest cells as well as some mesodermal cells. Okay, now tympanic cavity will also form mastoid antrum. What is mastoid antrum? I have already recorded a separate lecture for mastoid antrum, so you have to memorize it first. Then you can understand that mastoid antrum is also formed by this tympanic cavity, by the extension of the tympanic cavity. And remember one more point, no mastoid cells. Mastoid cells are basically air cells, air, AIR cells. So हवा के cells होते हैं जिसमें हवा होती है, जिसमें air filled होती है. So that cells are not present in the neonates. Okay, you have to remember. And the middle ear will continue to grow till puberty. Okay, till puberty middle ear will develop. Whereas if I talk about internal ear, so internal ear will complete its development till 20 to 22 week of the fetal development. ठीक है, हमने वीक्स ऑफ एम्ब्रियो पर रहे थे ना, वीक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. तो उसमें जो 20-22 वीक थे उसमें एयर, इंटरनल एयर फॉर्म हो जाता है, जबकि मिडल एयर वो प्यूबर्टी में जाके फॉर्म होता है, प्यूबर्टी तक डेवलपमेंट उसकी हो रही होती है. Now if we gonna talk about muscles, so inside middle ear there are 2 muscles, tympani muscles and stapedius muscle. And tympani muscle is formed by first pharyngeal arch, and stapedius muscle is formed by second pharyngeal arch. The mnemonic is to memorize it, as you know, PQRST. ठीक है, तो S पहले आ रहा है, लेकिन ये पहली वाली नर्व नहीं होगी, यहाँ पे दूसरी वाली फेरेंजियल नर्व होगी, फेरेंजियल आर्च है. ठीक है, तो यहाँ ये आपने उल्टा ऑपोजिट याद रखना है कि स्टेपिडियस पहले आ रहा है, S पहले आ रहा है, लेकिन बाद वाला नंबर होगा फेरेंजियल आर्च का, दैट इज़ PQRST. ठीक है, तो S के बाद T आ रहा है, लेकिन S सेकेंड फेरेंजियल आर्च से बनती है, जबकि T वाली मसल दैट इज टिम्पैनी मसल इज फॉर्म बाय फर्स्ट फेरेंजियल आर्च, and it is supplied by trigeminal nerve, and stapedius muscle is supplied by facial nerve. Now external ear, which is the most easiest topic. Now what happened, as you know, there are 3 parts of the external ear: external acoustic meatus, pinna, and the tympanic membrane. So external ear, first of all, external acoustic meatus, how it is formed? The
pharyngeal arch, the first pharyngeal groove will extend into the will form invagination, and they will form a canal like structure, and that canal is called as ear canal or external acoustic meatus. And one more point which you have to remember, that tympanic membrane is formed by ectoderm, endoderm and mesoderm. All three layers are involved in the formation of the tympanic membrane. How? Ectoderm of the pharyngeal groove, endoderm of the pharyngeal pouch, and the mesoderm of the pharyngeal arch is involved. Okay. Now, after forming tympanic membrane, after forming external acoustic meatus, the auricle, which is pinna, which is the last part, which among all the air, among whole air, the part which develops is the auricle or pinna. It is formed by first and second pharyngeal arches, mostly first pharyngeal arches, and the lobule of the auricle is the last part, which is formed by first pharyngeal arch only. ओके तो पूरा का पूरा ऑरिकल जो है वो फर्स्ट और सेकंड फेरेंजियल आर्च से बनता है, जबकि जो लॉब्यूल वाला पार्ट है, जो कि मैंने आपको एनाटॉमी में बता दिया लॉब्यूल क्या होता है, तो वो लॉब्यूल वाला जो पार्ट है वो फर्स्ट फेरेंजियल पाउच से बनता है, डेवलप होता है. सो दिस वाज द होल टॉपिक. यू हैव टू रिमेंबर, वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड, टेक केयर, गुड लक, बाय, थैंक यू.